बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज युस अस टॉपिक वुनकस यह बेवरेज प्लांट्स। बेवरेज प्लांट्स तो अमन मज इम्पार्टेंट प्लांट दैट इज टी। आज परो टी। आज परो टी। टी यानी चाय। टी यानी चाय। टी is the dried leaf of a bush. Tea is the dried leaf of a bush. It contains thein, and when added to boiling water along with sugar and milk, it gives a very cheap and stimulating drink. This is the most important beverage crop of India. This is the most important beverage crop of India. स्टार्ट कत पे गई वो वो यह चाय हज पैदाइश कल्टिवेशन यह कर पे गई हिंदुस्तान मज शुरू। टी बुश इज सपोज्ड टू बी इंडिजिनस टू चाइना। इंडिजिनस यानी ज़ाती तौर बुनियादी तौर कत गई शुरू चाइना, बट इट वाज रिपोर्टेड बाय मेजर रॉबर्ट ब्रूस। मेजर रॉबर्ट ब्रूस was he reported the tea in 1823 that indigenous tea bushes grew wild on the hill slopes of Upper Assam. On the hill slopes of Upper Assam. In the year 1840, tea seeds were imported from China. Tea seeds were imported from China, and commercial tea plantation was set up in the Brahmaputra Valley. In the Brahmaputra Valley. You see, teacher, chai, tea bush is a tropical and subtropical plant. It is a tropical and subtropical plant and thrives well in hot and humid climate. In hot and humid climate. There is a very close relationship between the climate, the yield, and the quality of tea. Climate, the yield, and the quality of tea. The ideal temperature for its growth is 20 to 30 degrees Celsius. Ideal temperature कोता शात यानी कोता कैसे आसुन 20 to 30 degree Celsius कैसे आसुन temperature. Above 35 and below 10 degrees Celsius are harmful. यानी temperature गैसना 35 अला ती गसुन की 10 degree below ती गैसना गसुन की. It requires 150 to 300 centimeter annual rainfall. यानी अथ कोता गैस रूद आसुन 150 to 300 centimeter annual rainfall गैसे आसी. Which should be well distributed throughout the year, while prolonged dry spell is harmful for tea. Prolonged dry spell is harmful for tea. High humidity, heavy dew, and morning fog favor rapid development of young leaves. Alternate waves of warm and cool winds are very helpful for tea leaves. Tea is a shade-loving plant. Tea is a kachi khasan zyad panas. It is a shade-loving plant. It is a shade-loving plant and develops more vigorously when planted along with shady trees. Tea bush grows well in well-drained, deep prairie looms. However, virgin forest soils rich in humus and iron content are considered to be the best soils for tea plantations. Relatively large proportion of phosphorus and potash in the soil gives special flavor to tea, as it is case in Darjeeling. In order to increase the yield, proper dose of nitrogenous fertilizers such as ammonium sulfate should be given to soil. Although
tea requires heavy rainfall for its growth. ये में तो गुणथे वुन आत गस rainfall आसुन वारिया और कोता गस आसुन तकरीबन 150 to 300 centimeters गस आसुन आत rainfall. ये गस ने की साथ गसन की बल्कि ये गस आसुन वक्त पत वक्त. Although tea requires heavy rainfall for its growth, stagnant water is injurious to its roots. आब गश ना जमा रोजन तल की अम सच गसन नुकसान. It is therefore grown on hill slopes where water drains away easily and waterlogging does not take place. प्लेनस मज अमिश खास कल्टिवेशन इवान करने कहीं बल्कि अमिश कल्टिवेशन इवान करने स्लूपन पे ताकि अत रोज न आब जमा कहीं. अगर अत आब रोज जमा यह गसान खराब. यह गसान खराब. How it grows equally well in the valley if the drainage is good. Most of the tea plantation in India are found at an elevation varying from 600 to 1800 meters above the mean sea level. यानी थजरत से आसान ये करना चाहिए प्रॉपर ग्रोथ. Tea is a labor intensive crop and requires abundant supply of cheap and skilled labor, especially at the time of plucking the tea leaves. This is a tedious process which requires skilled manipulation of fingers. Skilled manipulation of fingers for plucking 2 leaves and a bud at a time. 2 leaves and a bud at a time. For this purpose, women laborers are employed in large numbers. Particularly at lagan zayin at karna khatar. Currently, tea industry provides employment to 1 million workers. Tea industry it provides employment to 1 million workers through its forward and backward linkage. Another 10 million people derive their livelihood from tea. It is one of the largest employers of women among organized industries of India. Women constitute over 50% of the total workforce. Even to go to the ज़्यादा पनच आमज गसा जन गसा आमज वारिया इस्तेमाल. Wuchu ऐसे tea gardens are set up on the cleared hill slopes. Yim hill asan slope asan am shivan saaf karna em pach am pe chai lagna magar chai lagna bro kya shivan karna ki tall plant shivan lagna et ताकि अपर किन पे shade गोडथे वोन में तो ये shade loving plant चाहिए. एम पत क्या करान काम seeds are sown in the germination bed and the saplings transport to the garden. Bule shivan wale pat am emik tum sapling sh am shivan pat bakin jayen lagna. Wali wucho वर हिंदुस्तानस मज कपर अमिश कल्टिवेशन गसान कत स्टेटस मज अमिश कल्टिवेशन हिंदुस्तानस मज गसान. दपान युस ये टी प्लांट युस ये हिंदुस्तानस मज गसान वारियाहन जायन अमिश कल्टिवेशन. हिंदुस्तानस मज गसान अमिश कल्टिवेशन वारियाहन जायन मगर पर्टिकुलरली एक ये मैप हावान पर्टिकुलरली अमिश कल्टिवेशन गसान कैंसन स्टेटन मज. Particularly अमिश कल्टिवेशन कैंसन स्टेटन मज एक यत यह गो हिमाचल प्रदेश एक जायन जाय अमिश कल्टिवेशन गसान. यह गो केरला अमिश कल्टिवेशन गसान. तमिलनाडु जाय अत अमिश कल्टिवेशन गसान. बे अमिश कल्टिवेशन गसान एक यपर कन यथ वनान वेस्ट बंगाल यपर कन अमिश कल्टिवेशन गसान एक यथ एरियास मज अमिश कल्टिवेशन गसान. अमिश कल्टिवेशन अपर कन गसान गो शार्टस मज वनो युस ये टी प्लांट अमिश कल्टिवेशन कत स्टेटस मज हिंदुस्तानस मज गसान. अमिश कल्टिवेशन वोन मे तो यह वारियान स्टेटन मज गसान लक्ष्य लेवल पे मगर लार्ज स्केल लेवल पे यानी पर्टिकुलरली युस अमिश कल्टिवेशन सह आसाम स्टेट वेस्ट बंगाल तमिलनाडु केरला
त्रिपुरा कर्नाटकस मज खास करित अमिच कल्टिवेशन गसान।